Okay, so first we have to discuss syllabus of your corporate accounting. Okay, so corporate accounting is your paper. Previously, this paper is generally company accounts and auditing. Now it is corporate accounting and auditing. Only some minor changes have taken place in this subject. These changes are accounting standards have been removed from the syllabus. Previously, accounting standard was part of your syllabus in company accounts paper. Now accounting standards have been removed and they have introduced Ind AS. They have introduced Ind AS. Okay, this is the only difference. Remaining topics are same as it is. There is no changes in the topics. In old paper also, new paper also, same topics are there. Clear? In between, in some chapters, some methods have been changed. Minor changes are there. So on an average, major changes have not incorporated in this particular subject. Clear? So total subject is divided into 3 or 4 modules according to your study material, but that is not necessary for us. Generally, total how many chapters we have to learn, we need to understand that. So first topic which we have to cover is accounting for share capital and debenture. Accounting for share capital and debenture. Accounting for share capital and debenture, we have some subtopics like issue of shares, forfeiture of shares. Clear? Generally, issue of right shares, issue of sweat equity share, bonus shares, okay, and employee stock option plan, and buyback of shares, shares with differential rights. These are the subtopics in accounting for share capital. Okay, so accounting for share capital, we have some topics from equity shares also. We have one topic from preference share also. And after this, we have to understand underwriting of shares and debentures also. Clear? And then preference share, redemption of preference share, then issue of debentures and redemption of debentures. So these are the subtopics under what? Accounting for share capital. So accounting for share capital consisting of various subtopics. First subtopic is issue of shares and forfeiture of shares. Clear? Next is your right shares. Okay, then bonus shares. Clear? Thereafter buyback of shares, employee stock option, sweat equity, overview only, not in depth it is there. Then redemption of preference share and issue and redemption of debenture. So 2 times I explained this. These are the subtopics. Okay, and thereafter next topic is financial statements. Next topic is what? Financial statements. Financial statements of companies. In that we have to understand how to prepare balance sheet, how to prepare a statement of P&L, how to prepare cash flow statement. Clear? This is financial statement. In financial statement we have some other financial statements also. Banking company financial statements, insurance company financial statements, and after that only one extra topic which we have to learn is accounting standards. These accounting standards are purely Indian accounting standards. So this is your syllabus, 50 mark paper. And now which topics are 100% compulsory in exam is the question. Clear? First you should write down the topic names. Write the subject name first, corporate accounting. Today anyhow this will be resolved because already technician is available. No need to worry.
Okay. So you should write the subject name corporate accounting. In that first topic which we have to study is accounting for share capital and debentures. Accounting for share capital and debentures. So in this topic we have to study what, in what way shares will be issued, in what way shares will be generally forfeited, reissued, etc. etc. All this we'll understand at later stage. Next topic is bonus shares. Bonus shares. Next, underwriting of shares and debentures. Underwriting of shares and debentures. Underwriting of shares and debentures. Next, redemption of preference shares. Redemption of preference shares. Next, redemption of debentures. Redemption of debentures. Next, buyback of equity shares. Buyback. BUY. Buyback of equity shares. Next, financial statements of companies. Financial statements of companies. Next, banking company accounts. Banking company accounts. Next, insurance company accounts. Insurance company accounts. Okay. Next, electricity company accounts. Electricity company accounts. Next, Indian accounting standards. Okay, so these are the topics. Now in this, what are the compulsory chapters which are expected in examination? First, financial statements of companies, compulsory. And one more topic also should write, cash flow statement. Cash flow statement. So compulsory topics, please note that. Cash flow statement, compulsory chapter. Every attempt, compulsory question will come. Okay. Next, accounting standards, Indian accounting standard, compulsory. Without this, no paper will be set. Next, banking company, compulsory. Means banking insurance, 5 marks questions will come. Or generally one question will come from banking, then there is no question from insurance. Sometime one question from banking, insurance, both. So 10 mark question is coming from cash flow statement. 10 mark questions are coming from Indian accounting standards. 10 marks questions are coming from banking, insurance. Sometime only banking will come, sometime only insurance, sometime one question from each chapter.
Okay, then company financial statement compulsory 10 marks. Okay, so accounting standards, Indian accounting standard 10 mark, cash flow statement 10 marks, clear? Banking insurance company, total 2 chapters, this combining these two chapters 10 marks, तो total 30 हो गया है. Financial statements of company 10 marks, 40 हो गया है. अब remaining chapters whatever left from that 10 mark paper will come. Understand? So remaining actually paper will be coming for 60 marks, 60 or 70 marks. Extra question is also there, na? So 60 or 70 marks. So remaining extra, actually 50 mark paper only you have to attempt, but question paper will be set for 60-70 mark. So remaining 30 mark paper is coming from other chapters. In that choice is also available. What is available? Choice. So remaining topics which are available now here is, in this also if you sort out compulsory question means most important chapter is your buyback, underwriting, bonus share. Buyback, underwriting, bonus share. Okay, these are the important chapters. So first, before starting this subject, we need to understand company, certain basic terminologies about companies. Okay, because this is a corporate accounting paper, so we should have basic knowledge of company. Then only we can understand the subject in proper way. Okay, right. So first question is, company means what? Very simple question. So you already learned company law. तो बोलिए कंपनी का मतलब क्या है? फर्स्ट रो से बोलिए पहले. फर्स्ट रो से बोलिए. This is incorporated by okay, yes, artificial person. Very good. Next. ये सही आंसर है. नेक्स्ट. हाँ, कंपनीज एक्ट. वेरी गुड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. So whenever any people is asking about meaning and definition of company, simply first it is a artificial person. It is incorporated under Companies Act. And or before that, whatever act is applicable in that. So that is company. Clear? So you understand key what is the general meaning, basic meaning of company. Okay. Now features. What are the basic features of company? Why company form of business is important for our economy? Suppose if you are doing proprietary business, partnership business, then you can do the business in limited way only. But if you want to do the business in expanded way, diversified way, then through proprietary concern or partnership firm, practically impossible. You need to expand your business through funding only. So huge funding is required. So huge funding is possible for companies because they can generate the or they can procure the amount from public, and that amount they can invest in their projects. This is the reason कि company form of business is diversified business. Company form of business is what? Diversified business. It can diversify business throughout the globe also. So ultimately, throughout the globe, if they want to diversify, means funding required. So funding is coming from public. But directly public company will not be incorporated now. It is practically difficult. So sometime first they will set up small, thereafter step by step they will grow and they will be converting their small entity into large scale entity.
This is the reason ki company can be small also, company can be big also. So this is the reason ki in Companies Act different types of companies also covered. Even one person can also start company nowadays. Thereafter, if he is rendering the services in perfectly and satisfied manner, then business will grow. And after growing the business, he can improvise, he can convert the one person company into private company, then convert private company into public company also. Directly also public company possible, sometime step by step conversion is required. So ultimately, company is a company. Clear? The advantage of doing company form of business is what? Diversification is easy. Procurement of funding is easy. In other forms of business, procurement of funding is not possible because limited persons are there. Proprietary, only proprietor has to contribute. Partnership firm, only partners should contribute. Other people will not contribute in that. But in company, from throughout the India, people will invest the money. That is the facility available. That's why people will generally prefer company form of business if they want to do the business on large scale basis or diversified way. Understand, this is the objective actually behind company. Suppose if you want to start one company, that company is providing one service, any type of service you can assume, bhai, like software service. That software services you want to provide to each and every country also, that much capacity. With that much capacity you want to establish. So huge amount of funding required or not? So you have to raise that money from public. So if promoters will play an important role to establish a company. Who will play an important role? Promoters. Because the ideology behind setting up of company is promoters. The promoters are the key contributors, mind behind the company incorporation. So they will incorporate. Clear? So lot of mechanism will be there. Clear? So company means generally it is an artificial person. It is enacted by law. It is incorporated under law. Company should not do anything itself. To manage the company, generally a particular person is required. That person or the particular body is required. That body is called as what? Board of directors. That body is called as what? Board of directors. The company don't have any mind, company don't have any structure. Company is created by law. So it cannot operate itself. To operate the company, one body is required. So that body is called as what? Board of directors. So board of directors will generally operate the business, manage the business of company. Understand? So because of that, we have to understand some features also regarding company. So first you should explain what are the features. Then thereafter I will explain why company form of business is generally very much preferred. At later stage I will explain one more time. Don't worry. Chaliye, features. Yes, this side. Separate legal entity, very good. Separate legal entity means what? Owners. Separate legal entity means company form of business is separated. Clear? Only investors are owners of the company, not the persons who are managing the company. Okay, right. Next feature. Perpetual succession. Okay, perpetual succession means very good. Oh, very good. Means company will be started with the provisions of law and it should be dissolved also by the provisions of law. There is no other mechanism to dissolve the company. Company should start from legal procedure. Company should end with legal procedure. Even if all members died, all board of directors died, company will still live.
Company alive. Other members will come, other board of directors will join, then again company will start. Company business will continue. So company will closed only when legally order is passed, or in legal manner only we have to close the company. There is no other way to close the company. That is perpetual succession. Very good. Next, लिमिटेड लाइबिलिटी. कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. Members who are contributing in the company, they will have limited, but some companies unlimited liability is also there. But mostly in public companies, members liability is what? Limited only. Okay, the persons who are investing in shares, their liability will be limited to the extent of how much they have to pay only. Beyond that, they are not responsible. They are not responsible. Correct answer. Next. Common seal. Okay, common seal. Right. Common seal means what? Signature of the company. Means whenever a deal is set, ultimately that deal is authorized or it is not authorized will be decided on the basis of what? Company's official seal. If board of directors signed, auditor signed, that is not important. Company seal is important for every contract. Whose seal is important? Company seal. Company seal means the document which you are using for making the contract. In that document, proper seal of the company is required. Then only that agreement or contract is valid. Otherwise, that is not valid. Next, very good. Next, transferability of shares. Correct. Transferability of shares means shares can be freely transferable. Means in case of public proprietary concern partnership firm, there is no shares, but in company there is a shares. So shares can be transferable. Suppose you purchase the shares of Reliance Industries. Now you are not interested. So there is the obligation on you to hold the shares. You can transfer also. You can sell also. That is what? Transferability of shares. Understand? शेयर्स खरीदे आप, जबरदस्ती है क्या रखना आपके पास? आप पसंद नहीं है तो बेच लीजिए शेयर्स. तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफरेबिलिटी. तो ट्रांसफर का ऑप्शन रहेगा आपके पास. क्लियर? और क्या रहेगा? प्रॉफिट मोटिव तो रहता है. तो प्रॉफिट मोटिव इज नॉट ए फीचर ऑफ द कंपनी, because some companies are non-profit also. तभी तो बोले वही है फीचर्स, और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा. वो तो उस पर कवर्ड है. वो ऑफिशियल सील लग गया बाद तो जनरली कंपनी स्यू कर सकता है, कंपनी के ऊपर दूसरे लोग भी स्यू कर सकते हैं. वो तो फिर सील का मतलब क्या है? उसी में कवर्ड होता है पॉइंट वो. क्लियर? तो लीगली कुछ एक्शन लेने के लिए ऑफिशियल सील इस्तेमाल होता है. किसी पर्सन पे केस नहीं बनता. किस पे केस बनता? कंपनी पे बनता है. कंपनी के बिहाफ में जो पर्सन काम करा उस पर केस बनता है. समझे बात? तो मतलब वही है, ऑफिशियल सील में वही कवर होता है. तो ये आपके बेसिक फीचर्स है. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? व्हाई पीपल विल बी गोइंग फॉर incorporation of company. Already I told you, if you want to do the business in diversified way, company form of business is best. Clear? Suppose you completed professional course, after that you have very good innovative idea with you, and you have plan also, how to execute also, and how to control that. Each and everything you decided. But initial stage you started the business with small amount of investment, and that is succeeded also. Now you want to expand that. You want to expand that. For example, Indian examination system is what?
Question paper will be given, we have to write on the paper, and that paper will be submitted, and that is valued, and thereafter result will be released. Suppose in future the system will going to change. फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा. क्लियर? सपोज इन फ्यूचर यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ iPad. Clear? So directly from institute on your mail question paper will come on exact time पे mail आ जाएगा आपको. Or directly you can go to the website of the institute and you can download that question paper. Clear? And one institute app is available in your device. In that app you have the papers also. On that you have to write. On that you have to, जैसा मैं लिखता हूँ ना यहाँ पर, वैसा आपको लिखना पड़ेगा, समझो. And you have to convert that into PDF and you have to send to institute. खत्म हो गया. आप पेपर की जरूरत ही नहीं है ना. क्या लिखे? That is available with you also. That is available with institute also. Thereafter, if question paper is valued, digitally valued question, means answer sheet will be again sent to you. अब पेपर तुम्हारे को मिल रहा, तुम्हारा करेक्शन हुआ सो नहीं मिल रहा है, आपको अप्लाई करना पड़ रहा है. You have to apply. But suppose if this methodology is changed, digitally answer sheet is valued and again after valuation it is sent to your mailbox. Each and every student will have the facility to check the all valued papers or not, and result also. So environment friendly. To make the paper we have to cut the trees. अब क्या हो रहा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जा रहा है. तो ये नया आइडिया है आपके पास, बट इसके लिए, इसको चलाने के लिए क्या होना पड़ता, तो एक कंपनी बना रहे आप, स्मार्ट कॉम सोल्यूशन. So first we started private limited. So some of the organization, institutes, universities adopted your technology. They are very much satisfied. Now all governments also interested in. Each and every government of Indian state is also interested. They want to introduce in board also. They have to introduce in universities also. And CA, CMA institute also interested. तो तुम्हारा आप कितना बड़े में पैसा पैमाना लगाएगा आप? पूरे भारत देश में कितनी यूनिवर्सिटी है, कितने बोर्ड है, सब लोग आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको सबको सर्विस देने के लिए. तो जब क्या करेंगे आप, प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी पब्लिक में बदलेंगे आप, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है आपको. इसमें कन्वर्ट करेंगे पब्लिक कंपनी में. देन यू विल स्टार्ट योर ऑपरेशंस एंड इन दैट ऑल्सो यू सक्सीडेड. देन लिस्टिंग होता, क्या होता, लिस्टिंग होता आपका. कंटिन्यूसली 3 years सपोज वेरी गुड प्रॉफिट्स यू अर्न, टर्नओवर इज ऑल्सो वेरी गुड. आपको कॉन्फिडेंस आ जाता कि अब मेरी कंपनी एक अच्छे पोजीशन पर आ गई है. देन यू गो फॉर लिस्टिंग. क्या करते हैं आप, लिस्टिंग कराते हैं, आईपीओ कराते हैं. आप क्या कराते हैं, आईपीओ कराते हैं. एनएससी में, बीएससी में लिस्ट करा के आईपीओ कराते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर. मीन्स नाउ पब्लिक कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन योर कंपनी. प्रीवियसली पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस, promoters contribution is more and some of the shares has taken by employees and very limited amount of funding has been invested. But now you are converting your company into public company and you are going for IPO. इसके लिए जा रहे हैं आप, क्योंकि you need very huge amount of funding. So throughout the India, how many investors are there? They can apply in that. They can invest in the company. Understand? This is the reason कि people will start the company. Profit oriented है, but to do the business on large scale basis, you need huge amount of resources. Huge amount of resources are not possible in proprietary partnership firm. From company form of business only, you can manage that. That's why people will start what? Company. आया समझ में, कंपनी स्टार्ट क्यों कर रहे हैं अपन लोग? अब कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आप, कंपनी स्टार्ट क्यों करते वही नहीं मालूम है तो फायदा क्या है फिर? इसलिए मैं बेसिकली समझा दिया आपको. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज. कंपनीज कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज.
सेक्शन 8 कंपनीज, ओके. पब्लिक कंपनी, वेरी गुड. प्राइवेट कंपनी, वेरी गुड. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, वेरी गुड. सब्सिडरी, वेरी गुड. होल्डिंग, वेरी गुड. एसोसिएट, ओके. इन्वेस्टिंग कंपनी, करेक्ट. स्मॉल कंपनी में रहता ना, स्मॉल कंपनी. बोले ना होल्डिंग. नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी में रहता ना, गवर्नमेंट कंपनी. और तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. चलिए, so these are various types of companies. Already you have given correct answer. Okay, private, public, government, okay, and one person company, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये सब कंपनीज में आते हैं. किस में आते हैं? कंपनीज में आते हैं. क्लियर? तो योर आंसर इज 100% करेक्ट. नाउ प्राइवेट कंपनी मीन्स व्हाट, पब्लिक कंपनी मीन्स व्हाट? एक्सप्लेन दैट. हाँ, क्या बोले वो? अच्छा, नहीं नहीं, गलत आंसर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. तो गवर्नमेंट कंपनी रहती हो क्या? हुआ, शास्त्रीय संगीत में रिमिक्स कर दे रहे आप? कौन से के आंसर में कौन सा के मिला दे रहे क्या? आंसर जो है आप जो बोले गवर्नमेंट कंपनी का है, वो किसका है? गवर्नमेंट कंपनी. मतलब लॉ याद है आपको, लेकिन थोड़ा गैप आ जा रहा. चलो बोले तो सही, कम से कम अच्छी बात है. हियर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, डिफरेंसेस. कुछ बोले ना अभी आप? टू 200, ओके. तो कौन सा रहता वो? वेरी गुड. प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो है कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200 मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. लेकिन 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 मिनिमम कितने रहना? तो वो भी तो ज़रूरी है ना. तो प्राइवेट कंपनी विल हैव मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200. पब्लिक कंपनी 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड. फर्स्ट डिफरेंस ये रहना आपका. नेक्स्ट. पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्टेड रहता है, प्राइवेट मेंबर्स मेंबर्स में रहता है वो, बाहर वाले थोड़ी ना कर सकते उसमें. रेस्ट्रिक्टेड है, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में कितने रहना? पब्लिक में, पब्लिक में 7 रहना. प्राइवेट में कितने रहना? 2 रहना. आप करेक्ट है आंसर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी 2 मिनिमम रिक्वायर्ड, पब्लिक कंपनी मिनिमम मच रिक्वायर्ड 3. करेक्ट. नेक्स्ट. नेक्स्ट. प्राइवेट कंपनी में ऑलवेज प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना पड़ता. लिखना पड़ता प्राइवेट लिमिटेड वर्ड. पब्लिक कंपनी में ओनली लिमिटेड आता है, ओनली लिमिटेड. क्लियर? नेक्स्ट. और क्या डिफरेंस है? पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स इन पब्लिक. प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू कर सकता क्या? पब्लिक कंपनी कर सकता है. ये भी डिफरेंस है. और डिबेंचर पब्लिक कंपनी इशू कर सकता, प्राइवेट कंपनी. और क्या डिफरेंस है?
वो भी बराबर है, करेक्ट आंसर। प्राइवेट कंपनी अल्टीमेटली कैन कन्वर्ट इनटू पब्लिक, पब्लिक तो हमेशा पब्लिक ही रहता है, अब एक बार बड़े से छोटे में थोड़ी आता है फिर वो, करेक्ट। और क्या है डिफरेंस? पब्लिक कंपनीज में पब्लिक ओनर रहता, कौन रहता है ओनर? पब्लिक। मेंटेन कौन करता है उसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्राइवेट में पब्लिक नहीं रहती है, प्राइवेट मैनेजमेंट इज हैविंग द ओनरशिप। क्लियर? ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या है? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी ऑल्सो टोल्ड ना? हाँ, मीनिंग व्हाट? जो भी नॉलेज में है बोलो उसमें, शर्मा ने क्या बात है? वॉट एवर आंसर यू नो एक्सप्लेन। होल्डिंग बोलते हैं उसको, सब्सिडरी नहीं। एनी कंपनी विच हैज एक्वायर्ड more than 50% shares of another company, the company in which it has invested more than 50% share, the acquiring company called as holding, and the company in which acquisition is made, that company is called as subsidiary. Clear? उसके बाद नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। 51% है, पूरा अच्छा सेंटेंस बोलना उसमें। मोर देन 50% नहीं आता वर्डिंग वहाँ पर, नॉट लेस देन 51% रहना। एमसीक्यू में घुमा देता हूँ ना, मोर देन रहना, एटलीस्ट रहना, नॉट लेस देन रहना, फिर याद रहना वो। नॉट लेस देन 51% ऑफ शेयर्स, पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? सेंट्रल स्टेट और बोथ, सेंट्रल स्टेट और बोथ। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी which is incorporated outside India. Very good, correct. Any company which has incorporated outside India, but they have place of business in India. They have place of business in India. कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है बट इंडिया में उसका प्लेस है बिजनेस का, उसको क्या बोलेंगे अपन? अमेजॉन, एप्पल, फोर्ड, सैमसंग, क्लियर, टोयोटा, ये पूरे क्या है? फॉरेन कंपनीज है। और बहुत सारे नाम हैं लेकिन एग्जाम्पल के लिए अपन ये बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट दे हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। क्लियर? एंड दे हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया डायरेक्टली थ्रू एजेंट, थ्रू एनी ऑफिस ऑल्सो। वो थोड़ा आप लॉ में गए तो और डिटेल में रहता वहाँ पर। रफली योर आंसर इज करेक्ट। क्लियर? चलिए, गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो यू अंडरस्टैंड, फॉरेन कंपनीज ऑल्सो अंडरस्टैंड। अब लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज भी रहते ना। लिस्टेड कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज लिस्टेड इन एनएससी और बीएससी, एंड अनलिस्टेड कंपनी मीन्स विच इज नॉट लिस्टेड इन एनएससी और बीएससी। हाँ, स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं? ये नहीं बोल सकते आप लोग, आए मुश्किल रहता है। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी, ट्राई कर लो। फिर भी हिंट देता हूं, इसमें इसमें अमाउंट्स आते हैं, लिमिट्स पेड अप शेयर कैपिटल के। मोर देन 5 lakhs, लेस देन 1 crore। और दूसरे कोई बोलना चाह रहे? 50,
लेस देन 50। हाँ, क्या है लेस देन 50? टर्नओवर, पेड अप कैपिटल, वेरी गुड, अब सही है आंसर। पेड अप कैपिटल of company should not exceed 50 lakh rupees or any higher amount as may be prescribed, and this should not increase more than 10 crores. Clear? And turnover कितना रहना उसका? पेड अप शेयर कैपिटल तो should not exceed more than 50 lakhs and any higher amount prescribed by law, and that should also not exceed how much? 10 crores. तो अब टर्नओवर कितना रहना? टर्नओवर पेड अप कैपिटल तो सही आ गया। नेक्स्ट टर्नओवर बोलिए। टर्नओवर ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 crores और एनी हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब बाय लॉ, एंड दैट शुड नॉट एक्सीड 100 crores, दैट शुड नॉट एक्सीड 100 crores और शुड नॉट मोर देन 100 crores। तो उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है 50 लाख से ज़्यादा न रहना, या फिर जो अमाउंट प्रिस्क्राइब करे लॉ में वो अमाउंट 10 करोड़ से ज़्यादा न रहना। क्लियर? और अगर टर्नओवर की बात करेंगे तो टर्नओवर उसका 2 करोड़ से ज़्यादा न रहना, और जो अमाउंट प्रिस्क्राइब करे लॉ उसके हिसाब से मोर देन 100 करोड़ से ज़्यादा न रहना। तो कौन सी कंपनी बन जाएगा? वो स्मॉल कंपनी। अब कुछ यहाँ पर एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी आएंगे, कुछ ऐसे कंपनी से जो कभी भी जो है स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन है वो ध्यान से सुनो, एमसीक्यू में आ सकता है ये। पहला रहता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, तो फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनीज। फर्स्ट है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, दूसरा रहता है सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, और तीसरा है कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट। तो ये 3 केसेस में इसको स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे अपन, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 1% कंपनी। इनकॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन इनकॉर्पोरेट करता कंपनी, या कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट होता? आंसर बोल रहे ठीक है आप, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड बाय पर्सन नहीं बोलना, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एक्ट बोलना आप। वन पर्सन, एनी कंपनी इन विच ओनली वन पर्सन इज incorporating the company by Companies Act provisions. Okay, so one person only member, one person only director। तो उसको कैसे बोलना? वन मैन आर्मी बोलते हैं उसको। उन्होंने सब कुछ है, उन्होंने डायरेक्टर है, उन्होंने मेंबर है। क्लियर? तो 1% कंपनी को और क्या नाम से अपन पहचानते? सोल प्रोप्राइटरशिप, ओपीसी बोलते ना जी। तो 1% कंपनी को क्या बोलेंगे अपन लोग? ओपीसी। क्योंकि 1% कंपनी में पूरा नाम लिखने के बदल डायरेक्टली लॉ में शॉर्टकट में क्या लिख देते हो उसको? ओपीसी। क्लियर? और जनरली जब कोई भी प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम कितने रहना? 2 रहना। 2 से 1 हो गया तो क्या बन जाता उन्हों? नहीं बनता उन्हों, ऐसा घुमा देता एमसीक्यू में उन्हों। When number of members of private company falls below 2, it can become the 1% company। नो, फिर बढ़ जाएगा मेंबर वहाँ पर एक, फिर क्या हो जाएगा? एक मेंबर बढ़ा ले सकते हैं आप। क्लियर? पहले 2 थे, एक मर गया, फिर और एक नहीं आएगा ना, मरते क्या 1% कंपनी हो जाएगा, फिर आते चेंज नहीं होता है उसका टाइटल। 1% कंपनी विल बी 1% ओनली। हाँ, 1% कंपनी जनरली मोर नंबर ऑफ मेंबर्स आर ज्वाइनिंग मीन्स इट कैन नॉट बी 1% कंपनी। फिर क्या हो जाएगा वो? या तो प्राइवेट हो जाएगा या तो पब्लिक हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक पूरे पॉइंट समझ में आ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट, वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक नेम इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग अब? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब शेयर का मतलब क्या है बोलिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? Small units. So every unit is termed as what?
शेयर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है. So company's entire total share capital will be divided into units and each resulting unit is termed as what? Share. As a company will have 10 lakh rupees share capital and company will have 1 lakh shares. So 10 lakh divided by 1 lakh. तो फिर एक शेयर कितने का हो गया वहाँ पर? 10 रुपीज़ का हो गया. तो उसको क्या बोलेंगे? शेयर. एंड एवरी 1 यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर एंड 10 रुपीज शेयर क्या बोलेंगे? Every 1 unit is called as share and that is called as 10 rupee share. So every single unit को क्या बोलेंगे? Share. And its value is called as what? Share price. या face value कुछ भी बोल सकते हैं. आगे आप समझेंगे इसको अपन लोग. Clear? Next. तो शेयर का मतलब समझ आ गया है? क्या कोई डाउट है इसमें? अब डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक. शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है? शेयर एंड स्टॉक में क्या डिफरेंस है? पढ़े लॉ में, ये था ये लॉ में डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक. लॉ में पढ़े या नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, याद नहीं है शायद, गैप के कारण भूल गए होंगे. गैप आने से भूल गए होंगे ना? ठीक है, सुनिए. सबसे पहला जो डिफरेंस रहता है, पेड अप. जो शेयर है वो पार्टली पेड अप भी रह सकता है, फुल्ली पेड अप भी रह सकता है. शेयर्स कैन बी पार्टली पेड अप ऑल्सो, फुल्ली पेड अप ऑल्सो. जो स्टॉक रहता है हमेशा फुल्ली पेड अप रहता है. स्टॉक क्या रहता है? हमेशा फुल्ली पेड अप रहता है. एंड शेयर का जो है नॉमिनल वैल्यू रहता है, जैसा 1 रुपी है, 10 रुपी है, 100 रुपी है. स्टॉक का जो है जनरली कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं रहता है. स्टॉक का कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं रहता है. नॉमिनल वैल्यू का मतलब है फ्यूचर में नॉमिनल वैल्यू को कम भी कर सकते हैं. नॉमिनल वैल्यू को कम भी कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए टाटा स्टील है. टाटा स्टील का पहले जो शेयर था उसका नॉमिनल वैल्यू पहले 10 रुपये का था. कितने का था? उसको जो है क्या कर दिए वो लोग? 1 रुपी कर दिए. क्या कर दिए? तो एक शेयर कितने टुकड़ों में डिवाइड हो गया? 10 टुकड़ों में डिवाइड हो गया. प्रीवियसली इट्स फेस वैल्यू इज हाउ मच? 10 रुपीज. नॉट 10 रुपी फेस वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू 1 रुपी. तो नॉमिनल वैल्यू का मतलब है एक शेयर का वैल्यू कितना, एक शेयर का वैल्यू कितना. तो फ्यूचर में उसको अपन लोग कम भी कर सकते हैं. सपोज 100 रुपी शेयर, तो इन फ्यूचर दैट 100 रुपी शेयर कैन बी कन्वर्टेड टू 10 रुपी ऑल्सो. तो शेयर होल्डर इज हैविंग 1 शेयर, दैट पर्सन विल गेट 10 शेयर्स ऑफ 10. वैल्यू उतना ही रहेगा उसका, बट नंबर बढ़ जाएगा. नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. जैसे आप एग्जांपल के लिए तुम टाटा स्टील में इन्वेस्ट करें. यू हैव इन्वेस्टेड इन टाटा स्टील. ओके, यू हैव 1000 शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज. नाउ टाटा स्टील कन्वर्टेड 10 रुपी शेयर इंटू 1 रुपी. 10 रुपी शेयर इंटू 1 रुपी. ओके, so your shares will be increased by 1000 into 10. 10,000 हो जाएगा. बट वैल्यू विल नॉट इंक्रीज. वैल्यू विल नॉट इंक्रीज. तो इससे क्या हो जाएगा मालूम है? शेयर होल्डर का क्वांटिटी ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज बट वैल्यू विल रिमेन सेम. तो सिंपल भाषा में बोलते हैं उसको छुट्टा कराना, चेंज. जैसे 100 रुपीज नोट है आपके पास, मुझे दिए 10 रुपए के 10 नोट ले लिया आप. क्लियर? तो शेयर स्प्लिटिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? शेयर स्प्लिटिंग. तो नॉमिनल वैल्यू इज यूज फॉर व्हाट? स्प्लिटिंग पर्पस. नॉमिनल वैल्यू इज यूज फॉर व्हाट? स्प्लिटिंग पर्पस. इशूइंग बोनस शेयर्स. अगर आपका शेयर का नॉमिनल वैल्यू क्या है वही नहीं मालूम है तो स्प्लिटिंग करने नहीं आएगा. फिर आपको फ्यूचर में कितने बोनस शेयर इशू करना है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा. डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू पे कितना दे रहे नहीं समझ में आएगा. इसलिए उसका नॉमिनल वैल्यू डिसाइड करना पड़ता. क्या डिसाइड करना पड़ता? नॉमिनल वैल्यू. क्लियर? इसलिए नॉमिनल वैल्यू जरूरी है. स्टॉक में नॉमिनल वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक स्प्लिट करते नहीं अपन. स्टॉक को अपन बोनस में लेके जाते नहीं अपन और स्टॉक के ऊपर डिविडेंड होता ही नहीं है. इसलिए इसको नॉमिनल वैल्यू की जरूरत नहीं है. आया समझ में? स्टॉक का और एक मतलब भी सुनिए. जैसे आप एक व्यापारी है, यू आर ए बिजनेसमैन, यू हैव
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक मीन्स आइटम्स, एफएमसीजी आइटम्स। क्या क्या आइटम्स है? राइस, वीट, ऑयल, सोप्स, शैम्पूज, क्लियर, and other items also. Suppose if anybody asks you, you will explain separate. I'm having 1 lakh rupee rice, 2 lakh rupees wheat. Yeah, बोलेंगे my business is having 10 lakh rupees stock. Which is more convenient for you? So similarly, suppose you invested in Tata Group. You have Tata Steel share also, Tata Motor share also, you have Tata ELXI share also. Clear? So each and every company is related to Tata Group, but all companies will declare their dividend on same data? No. Different companies will declare the dividend on different dates. So it is practically difficult for investor to analyze the due dates of dividends and on which date dividend is collected or not if he is a very big investor. So they will convert all Tata Group shares into one stock. तो किस में कन्वर्ट करा लेते हैं लोग? स्टॉक में कन्वर्ट करा लेते हैं। पूरा मिलाकर उसका वैल्यू कितना? जैसा मैं भी एग्जांपल देना किराना स्टोर का, चावल, आटा, मैदा, सोप, अलग अलग बोलेंगे या पूरे को मिलाकर एक बार क्या बोलेंगे? स्टॉक। अंडरस्टैंड? क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर। क्लियर? स्टॉक का जो डिनोमिनेशन है वो अनइक्वल हो सकता है। स्टॉक डिनोमिनेशन इज व्हाट? अनइक्वल, बट शेयर डिनोमिनेशन इज ऑलवेज सेम। जैसा शेयर 10 रुपए का है तो 10 ही रहता है सबका। स्टॉक अलग अलग हो सकता है डिनोमिनेशन, क्योंकि अब एक स्टॉक में देखिए भाई 10 आइटम्स है। जैसा टाटा मोटर शेयर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्टॉक, टाटा स्टील शेयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टॉक, ELXI ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टॉक, बट सबके दाम सेम है, अलग अलग है, तो डिनोमिनेशन अलग अलग बोलते हैं उसको। लेकिन तुम्हारे पास रिलायंस कंपनी का शेयर है, 1000 शेयर है, तो एक शेयर का रेट भी तो सेम ही रहेगा और अलग अलग भी करे तो सेम ही रहेगा, एक यूनिट का शेयर। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जो है टाटा स्टील का, टाटा मोटर, टाटा ELXI, टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन, TCS, इन सबके शेयर्स है। इन सबको मिलाकर आप एक स्टॉक बनाएं, टाटा ग्रुप स्टॉक। बट व्हेन यू सेपरेट ईच एंड एवरी शेयर इज सेम, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू और नॉट। बट रिलायंस कंपनी तुम क्या करें, पहले 500 शेयर खरीदे, बाद में फिर 100 शेयर खरीदे, ऐसा करके 1000 शेयर खरीदे, आप अलग अलग दाम से खरीदे, लेकिन जब बेचने जाएंगे तो सबको अलग अलग रेट मिलेंगे, एक ही रेट मिलता, इसलिए उसका डिनोमिनेशन सेम रहता। आया समझ में? मतलब डिनोमिनेशन का मतलब क्या है? डिनोमिनेशन का मतलब है every individual value is having same value in case of share, but in case of stock different value, in case of stock different value, ये उसका मतलब है। आया समझ में? स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस है, या फिर से रिपीट करना पड़ेगा? देखिए, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। जनरली स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करते। जनरली क्या करते हैं अपन लोग? शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट नहीं करते अपन। ये डिफरेंसेस दोनों के बीच में। आया समझ में? एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, याद रख लीजिए इससे। किसमें पूछ सकता है? लॉ में भी पूछ सकता है। तो सो फार यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। क्लियर? अब अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कितने टाइप के शेयर्स रहते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या रहते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। शेयर्स जनरली स्टार्टिंग व्हेन कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेटेड 3 टाइप्स ऑफ शेयर्स थे। कितने थे? अपना कंपनीज एक्ट कब बना? 1956 में बना जी। ये तो नया कंपनीज एक्ट है 2013 वाला। कब बना कंपनीज एक्ट? 1956। Thereafter new Companies Act came into existence from 2013. So 1956 original Companies Act, we have 3 types of shares: equity share, preference share, deferred share बोलकर। But later on, because of certain amendments, only 2 types of shares only applicable. That is equity share, preference share.
अब किसी भी कंपनी में जब पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो दो ही तरह के शेयर रहेंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स में कैटेगरीज भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर में भी कैटेगरीज हो सकते हैं। अब इक्विटी शेयर में जनरली कैटेगरीज नहीं रहते, बट अलग अलग नाम से उसको बुला सकते हैं अपन। बट प्रेफरेंस शेयर में कैटेगरीज होते हैं, प्रेफरेंस शेयर में कैटेगरीज होते हैं। तो इन इक्विटी शेयर देर इज नो क्लासिफिकेशन, बट इट कैन बी टर्म्ड विथ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। जैसा समटाइम इट विल बी कॉल्ड एज राइट शेयर, कभी कभी क्या बोलते हैं उसको अपन, राइट शेयर बोलते हैं। राइट शेयर क्या रहता है, इक्विटी ही रहता है। कभी कभी क्या बोलते हैं, बोनस शेयर बोलते हैं अपन, बोनस शेयर भी क्या रहता, इक्विटी ही रहता है। कभी कभी स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर, बट हमेशा क्या रहता है, इक्विटी ही रहता है। वो नाम अलग अलग है इनके, राइट, स्वेट, बोनस। अब प्रेफरेंस शेयर में कैटेगरीज रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। तो पहले मुझे ये बताओ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है? देखो भाई, अपने पास सब्जेक्ट पढ़ा है तो टाइम है ना, तो मैं पूरा बेसिक से पढ़ाता हूं। अब टाइम नहीं है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब टाइम है, पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं। करेक्ट। इक्विटी शेयर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, वेरी गुड, करेक्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट हैविंग द ओनरशिप राइट, बराबर आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, preference shareholders will get preference dividend, equity shareholders will get equity dividend, okay. और very good, preference shareholders will get the capital first whenever company is liquidated or generally insolvent. So at the time of insolvency or liquidation, first whose capital is repaid, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसलिए तो नाम है प्रेफरेंस है उनके। बाद में आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इट विल बी गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। देन नेक्स्ट, विच रेट, क्या रेट, हाँ, डिविडेंड रेट इज 6 फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वेरी गुड। इक्विटी का वेरी होते रहता है, इक्विटी का डिविडेंड रेट क्या होता, इक्विटी डिविडेंड रेट विल चेंज, sometime increase, sometime decrease, but preference shareholder dividend rate is always same, fix, very good, correct answer. Or very good, equity shareholders will have voting right, barabar answer. Preference shareholder no voting right. Next, preference shares में there are some categories, equity share will not have any category, equity equity रहता हमेशा, preference में different different types रहते हैं, different different क्या रहते हैं, types रहते हैं। This is the difference between equity share and preference share, okay? चलिए, तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे अपन लोग प्रेफरेंस शेयर में कितने टाइप रहते हैं। क्लियर, क्या डिस्कस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स में कितने टाइप रहते हैं, और उसके बाद से स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्लियर, अब ये क्लास टाइम वेस्ट नहीं होना बोलकर बेसिक पढ़ा दिया मैं, ऑलरेडी पढ़े होंगे तुम लोग, बट तुम्हारे सब्जेक्ट में बुक में है ये सब चीज़, ऐसा मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, तो स्टडी मटेरियल में है सभी ये। तो टाइम पास करो, मैं तुम्हारा टाइम क्यों खराब करूँ, मैं पहले आधा घंटा मेरा इन्वेस्ट हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो, क्लियर।